Hello friends, a great welcome to my channel, Literature and Cross-Cultural Encounters. This is a very important subject for Delhi University students and some topics are more important than the others and one of those topics is Toys by Roland Barthes. Living in a Globalized World, Part 5. Literature and cross-cultural encounters is divided into many parts. One of the part is living in a globalized world. Globalization का क्या impact है इसी तरीके के chapters हैं इस part के अंदर and one of the chapters is by the very famous structuralist Roland Barthes and the chapter's name is Toys. Let us proceed to this chapter, take down all the notes and that will really be helpful for your examination. To cover the important chapters of cross culture, you can refer to this playlist, the same link I'll provide in description too. Roland Barthes was from France and a great literary theorist specifically for being associated with structuralism and deconstruction. He was an essayist, philosopher, critic, semiotician, and his work engaged in the analysis of variety of sign systems. Sign and signifier theory you must have heard, although given by Saussure, but was developed by Roland Barthes too. Mainly derived from Western popular culture and had a lifespan of 1915 to 1980. Let us read about this chapter directly from his words. Let us start from his words. Toys always mean something, and the something is always entirely socialized, constituted by the myths or the techniques of modern adult life. This is what he says. Toys, although are meant to be played by kids, by the children, but are entirely socialized and are created from the techniques of the modern adult life. मॉडर्न अडल्ट लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए अभी इस वर्ड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड दिस phrase actually is the essence of this whole chapter. Toys do not mean just gaming or having fun. They mean something else. What is that something else? This is what we are going to understand today. Something else. Socializing and bringing children up to assume the common roles of adult life. जिस तरीके के टॉयज एक बच्चे को दिए जाते हैं ना वो बच्चा उसी हिसाब से डिसाइड करता है कि अपनी लाइफ में उसको बड़े होकर क्या करना है और अडल्ट लाइफ में उसके रोल्स क्या होने चाहिए. This was published under Mythologies. Mythologies is a collection of articles that were first published in newspapers and Roland Barthes wrote on things in fashions that we ordinarily disregard and accept without question. सोसाइटी हमें किस तरीके की चीजें प्रोवाइड करती है क्या फैशन क्या ट्रेंड प्रोवाइड करती है इवन टॉयज विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे टॉयज ट्राउजर्स एड्स वॉशिंग पाउडर किस तरीके से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ये सभी प्रोडक्ट्स और वो सभी प्रोडक्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. He believed that daily items that appear straightforward and innocent and simple. ठीक है ये टॉय है एक बच्चे के लिए इट इज ओके बच्चा is very happy seeing the color and shape of the toy and it is nothing more than that. No, he says no. The toys and all the objects have deeper meaning that go beyond their utilitarian purposes and are connected to the prevailing ideologies in society. So he says कि toys सिर्फ toys नहीं है, not only the equipment with which a child plays, it develops certain ideologies of the society. His approach to research is straightforward. He looks for supplementary meanings. Toys सिर्फ toys नहीं है, toys के साथ बहुत सारी connotations जुड़ी हैं, additional meanings जुड़े हैं that go beyond the accepted and literal meaning, denotative meaning. Denotative meaning क्या हुआ एक toy का toy is just a toy. लेकिन connotative meaning कुछ ideologies हर toy के साथ जुड़ी होती हैं. Those ideologies we will discuss today.
For example, Barthes points out toy cars in petrol stations make the child believe that it is normal and natural to own cars. अगर आप एक छोटे बच्चे को 4-5 साल के बच्चे को इस तरीके का टॉय देंगे खेलने के लिए जिसमें एक कार है, एक पेट्रोल स्टेशन है, तो बच्चा एक आइडियोलॉजी अपने मन में बना लेगा कि बड़े होकर मेरे पास भी मेरी खुद की एक कार होगी जिसमें मैं फ्यूल फिलिंग के लिए जाऊंगा. He will take pride in these kind of things, thus blinding the child to the massive amount of fuel consumption. ये टॉय बच्चे को फ्यूल कंजम्पशन के एक्सेस फ्यूल कंजम्पशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे, लेकिन ग्लोरीफाई कर रहा है इस फैक्ट को कि एवरीवन शुड हैव अ कार, एवरीवन शुड गो टू द फिलिंग स्टेशन. So individual ownership of car entails here and fail to encourage the child to explore other alternative modes of transport. मेट्रो में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ट्रेवल किया जा सकता है, उसको एनकरेज करने की जगह कार को ओन करना, कार में ट्रेवल करना, फ्यूल फिलिंग करवाना, इस तरीके की आइडियोलॉजीज एक बच्चे के लिए एनकरेज की जाती है. Now have a look at this toy. Tankers and soldiers fighting with each other. A child who is provided with soldiers or tanks to play with cannot realize that war is destructive and unnatural. War करनी ही क्यों है? War is completely destructive, everyone knows. लेकिन हम बच्चे के सामने ऐसे टॉयज देकर क्या करते हैं? वॉर्स को ग्लोरीफाई करते हैं. बड़ा होकर मैं भी एक सोल्जर बनूंगा. ऑल्दो एक कंट्री के लिए सोल्जर इज अ नीड. आई एम नॉट सेइंग कि सोल्जर की नीड नहीं है, सिक्योरिटी के लिए चाहिए सोल्जर्स, लेकिन सोल्जर इज समथिंग विच इज नॉट प्रोडक्टिव. कुछ भी प्रोडक्टिव तो नहीं है. एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने में बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होती हैं. बट जब हम ऐसे टॉयज एक बच्चे को देखते हैं तो उसके साथ वो डिस्ट्रक्टिव लेवल एसोसिएट नहीं होता, सिर्फ वॉर्स का ग्लोरिफिकेशन एसोसिएट होता है. He says that a child who plays with toy soldiers will gradually start believing that these objects have always existed. ये तो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया, ये तो हमेशा से होते हैं और बहुत मजा आता होगा सोल्जर बनकर, बहुत मजा आता होगा दुश्मन पर गोलियां चलाने में, दुश्मन पर बम बरसाने में. Socially constructed meanings and institutions are passed off as natural. मीनिंग तो सोशली क्रिएट किया गया ना. भगवान ने तो पेड़, पहाड़, नदियां बनाई थी, भगवान ने टैंकर्स नहीं बनाए थे. A toy soldier is going to send a subtle message to the child that there is nothing wrong in countries going to war and people killing each other. एक दूसरे को मार सकते हैं, it is okay. The destructive and inhuman aspect of war are glorified. And who has not seen this kitchen set in childhood? Specifically, I am talking here to all the girls. Sorry to say, but these kind of toys are generally gifted to girls. Don't we ever go to gift shops and ask कि बच्चे के लिए गिफ्ट चाहिए? And the shopkeeper asks us, boy है या girl है? What does it mean? Boy है तो किचन सेट नहीं देंगे, गर्ल है तो किचन सेट देंगे, बॉय है तो टैंकर, सोल्जर्स, कार्स गिफ्ट करेंगे, अगर गर्ल है तो डॉल गिफ्ट करेंगे. इस तरीके की आइडियोलॉजीज भी तो टॉयज ही क्रिएट करते हैं. So most probably girls will get kitchen sets, makeup kit or dolls as gifts. Raise your hands at present if you're watching this video and agree. I know I'll not be able to see your raised hands, but this sentence is just giving me a satisfaction that yes, you agree with me. Not only do such toys lack in imagination, they are meant to condition children into viewing women, not only women, I'll say even men, in stereotyped roles. Barthes' perspective here is feminist and he is critical of the role played by toys in molding the gender attitudes of children. बच्चों को भी बचपन से ही पता चल जाता है. कभी सुना होगा ना वर्ड, चलो घर घर खेलते हैं.
अगर दो बच्चे, एक बॉय है एक गर्ल है और घर घर खेल रहे हैं, तो most of the time that boy, छोटा बच्चा, will always go to the office and the girl, that छोटी लड़की, will always take care of the kitchen and the house. इसी तरीके की आइडियोलॉजीज के साथ हम सब बड़े हुए हैं, but it is our foremost duty to save the future generation from this kind of ideology. This is a clip from one of my favorite shows, Friends, and I always admire this show for being non-stereotypical. But इस शो में भी इतने ग्रैंड लेवल, इंटरनेशनल लेवल के शो में भी इस तरीके के स्टीरियोटिपिकल इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं. Have a look at this dialogue. Ross, one of the central characters, gets really worried when he sees that his son is playing with a Barbie and says, "What is my boy doing with a Barbie?" And then tries his best that boy should leave this Barbie doll and should be attracted to this soldier. कभी कभी लगता है हमारी भी कोई गलती नहीं है. वी आर प्रोग्राम दिस वे एंड वी मॉक इफ अ बॉय इज प्लेइंग विद अ बार्बी. अरे लड़के होकर डॉल से खेल रहे हो. दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी. Next, Barthes expresses his dissatisfaction with plastic and metal as raw materials to manufacture toys. Mechanical mass-produced toys are compared to those handcrafted by artisans. तो वो कहते हैं कि पुराने बनाए हुए जो आर्टिसंस के हाथ के टॉयज होते थे ना, उनसे बेटर कुछ नहीं है. और आजकल फैक्ट्री मेड टॉयज ने उसकी शेप ले ली है और दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल्स and not good for environment as well as for the children. So he recalls wooden farmhouses that were made by craftspeople once upon a time. Plastic or metal are not appealing materials and they produce irritating sounds and do not establish a long-lasting relationship with the child. ना तो उतने ड्यूरेबल होते हैं कि एक बच्चा बहुत साल तक एक टॉय अपने पास रखे और उसके साथ एसोसिएट हो जाए, उसके साथ अटैच हो जाए. ऐसे बिल्कुल लोकल क्वालिटी के छोटे छोटे टॉयज आने लगे जो कि बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और the child is not able to have any kind of association, any kind of emotional attachment with a particular toy. This is all consumerism actually. Wood is a material that is warm, soft, human and pleasing. This is what Roland Barthes thinks about wood. Have a look at the wooden toys. बात ही अलग है ना wooden toys की in comparison to the plastic toys. Barthes eventually develops a fondness for handcrafted wooden toys that were once popular before mass-produced factory-made toys made of plastic or metal took control. तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं वुडन टॉयज के लिए और कह रहे हैं कि आजकल तो मार्केट में मास प्रोड्यूस्ड, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक टॉयज आ गए. He talks about Vosges region of France farmhouses. फ्रांस में एक रीजन है वॉस्केस रीजन, famous for beautiful woodwork made by hand. Contrary to mechanical toys which a youngster can use but does not enjoy the touch of or even the possession of because they break easily. बड़ी आसानी से टूट जाएंगे ये तो. These toys are enjoyable to play with but not durable. Further, he criticized the contemporary French toys and says that these toys are just the imitation of the things found in the adult world. एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 6 months 7 months का है, उसको दिखा दी जाती है ऐसी साइकिल, तो वो कहते हैं कि जब मैं 3-4 साल का हो जाऊंगा तो ऐसी साइकिल ओन करूंगा. 3-4 साल के बच्चे को दिखा दी जाती है एक कार, तो वो सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं उस कार को ओन करूंगा. एक गर्ल को दिखा दिया जाता है एक सुंदर सा घर, एक डॉल हाउस, तो वो सोचती है बड़ी होकर मैं किसी की वाइफ बनूंगी और इस घर को हैंडल करूंगी. तो शेप किया जा रहा है उनको उनके फ्यूचर रोल के लिए, rather than the try should be to make them creative. Barthes focuses on the advantages of using wood rather than plastic or metal to construct toys in the final paragraph of this essay, and additionally he criticized
mechanical mass-produced toys. So he just says that the kids should be given such a toys that can make them creative rather than preparing them for their future roles. बच्चों को ऐसे टॉयज दो जो उनको क्रिएटिव बनाए, ना कि उनको उनका फ्यूचर रोल बनाए. I hope you loved this explanation. Please provide me your valuable feedback in the form of comments. For the upcoming exam, it is late to join the session, but you can always join for the next session and can get connected to us for your admission purpose, and the link to get connected is given in description. A great best of luck to everyone for your examination, and please try to show me your question paper after you appear for it.